To start the class, first of all, it's very good afternoon to all. हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये रिटेन अर्निंग्स क्या हुआ कि प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जिसको कि कंपनी ने या बिजनेसेस ने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि रिटेन अर्निंग्स कंपनियां रखती क्यों हैं? नाम से ही क्लियर है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड मतलब रखा गया, अर्निंग्स मतलब part of the profit which has been kept aside by the business. Now, why the business keeps aside the profits or retains the earnings? The idea is very simple. It retains because it wants to make sure that it has sufficient funds when the need arises. In the times of crisis, it has sufficient funds. Secondly, if the business has the retained earnings, which acts as an internal source of finance, it may use this source of finance for diversifying itself, for expanding the business, right? तो या कोई अनफोर्सीन इवेंट ऐसा हो गया जहां से बिजनेस के पास इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उससे बिजनेस निपटने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स को रखता है। कभी कभी हम लोग इसके लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्ड का भी यूज करते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे? दो बातें ध्यान देनी है यहाँ पर। रिटेन अर्निंग सबसे पहले तो पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड का। किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड का। या अगर और प्रिसाइज हम लोग बात करें तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में जाएगा। किसके हिस्से में जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इसमें कोई मतलब रोल नहीं होगा। Now the thing is why the equity shareholders will get the entire retained earnings, because ultimately whatever residual profit is left with the business goes to the equity shareholders. They are the true owners of the business. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो हम लोग ऑलरेडी एक अग्रीड या प्री डिसाइडेड रेट ऑफ डिविडेंड पे हमने डिविडेंड दे दिया। अब जो सारे खर्चों को काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही जाता है। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, यानी कि जो जब आप शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे कि शेयर होल्डर्स को कितना दिया जाए प्रॉफिट्स वगैरह, या जब आप बुक वैल्यू निकालते हैं तो बुक वैल्यू की कैलकुलेशन में रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट फॉर्म करता है, या इक्विटी शेयर कैपिटल का एक मेजर हिस्सा बनता है। दूसरी बात ये कि आपने मतलब बिजनेस ने क्या किया कि अपने पास प्रॉफिट्स को रिटेन करके रखा। बिजनेस चाहता तो उस प्रॉफिट को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता था, कहीं और लगा सकता था, लेकिन बिजनेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिजनेस ने उसको अपने पास होल्ड करके कैश के फॉर्म में रखा। किस फॉर्म में रखा? कैश के फॉर्म में। तो शायद आपको याद होगा इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था कि अगर हम लोग इस पैसे को, इस प्रॉफिट को अपने पास होल्ड करके नहीं रखते, कहीं दूसरी जगह अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते तो शायद मुझे कुछ रिटर्न मिलता, जिसको हमने अभी क्या किया? फिलहाल सैक्रिफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि आई वांटेड टू हैव कैश इन माय बिजनेस, टू बी सेफ अबाउट माय फ्यूचर, टू मेक श्योर दैट द बिजनेस bails itself out of certain unforeseen events. ठीक है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। Companies do not generally distribute the entire profits earned by them
by way of dividend, by way of dividend amongst the shareholders, full stop. Some profits are retained. Some profits are retained by them for future expansion, by them for future expansion of the business. There is a misconception. There is a misconception that retained earnings are free of cost. By retaining the earnings, by retaining the earnings, comma, the company has deprived the shareholders of deprive the shareholders of some earnings, full stop. The cost of retained earnings, the cost of retained earnings is the earning foregone by the shareholders earnings foregone by the shareholders, full stop. In other words, foregone, F-O-R-G-O-N-E, foregone by the shareholders. In other words, comma, opportunity cost of retained earnings, opportunity cost of retained earnings, opportunity cost of retained earnings may be taken as the cost of the retained earnings. Taken as the cost of retained earnings, full stop. It is equal to the income. It is equal to the income that the shareholders could have otherwise earned. Shareholders could have otherwise earned, E-A-R-N-E-D, earned by placing these funds in alternative investments. इसको एक एग्जांपल से हम लोग पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं. पैराग्राफ चेंज करना. For example,
If the shareholders could have invested the funds, for example, if the shareholders could have invested the funds in alternative channels, comma, they could have got a return of 10%. They could have got a return of 10%. Had they been given the dividends by the company. Had they been given the dividends by the company. Full stop. Here, comma, cost of retained earnings may therefore be taken to be 10%. May therefore be taken at 10%. At 10%, return. Paragraph change करना. The above analysis can also be understood in the following manner. Full stop. Suppose, comma, the earnings not retained by the company, is passed on to the shareholders, and are invested in equity shares full stop. It means that if profits were paid as dividends, and simultaneously an offer for right issue of shares was made, comma, the shareholders would have subscribed to the right shares
on the expectation of certain return, on the expectation of certain return, full stop. And on the expectation of certain return, full stop. This expected return can be taken as cost of retained earnings of the company. This expected return can be taken as the cost of retained earnings of the company. Can be taken as the cost of retained earnings of the company. Paragraph change कीजिएगा. In the above example, we have assumed that the shareholders will have with them the amount of retained earnings that the shareholders will have with them the amount of retained earnings available when distributed by the company. Distributed by the company, full stop. In actual practice, it does not happen. In actual practice, it does not happen, full stop. The shareholders have to pay tax on the dividends received. The shareholders have to pay tax on the dividend received, comma, incur brokerage cost, comma, consultation fees, etc. for making investments. This means that the funds available with the shareholders, are less than what they would have been with the company. Had they been retained by it. Had they been retained by it, full stop. On account of this reason, cost of retained earnings to the company
would be always less than the cost of new equity shares. Full stop. एक बार पढ़ के देखो तो फटाफट। बात नहीं करो, जल्दी पढ़ो जी। देखिए, दो एस्पेक्ट से हम लोगों ने इसको, मैंने आपसे शेयर किया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी एक लूज होती है उसको कैश में होल्ड करके, राइट? बिकॉज इफ यू होल्ड एन एसेट in the form of cash and not making sure that it is being used, so you are losing some opportunity of earning profits. Had you invested that cash which you are holding in cash somewhere else, you would have made some earnings out of those investments. Now that opportunity has been lost by you. That opportunity has been lost by you. So the opportunity lost in case of retained earnings is referred to as cost of retained earnings. Sometimes if you look at it from the company's point of view, in another sense, the thing is that had the company not held the profits with itself, had it distributed those profits amongst the shareholders in the form of dividends, what would have happened? The shareholders, on getting that dividend from the company or earnings in the form of dividend from the company, would have invested in buying the equity shares of the same companies. These are all assumptions. There might be a possibility that the shareholders, after receiving the dividend, would not have preferred to buy the equity shares of the same company from which it had, or they have received the dividend. They might have opted to buy the shares of some other company. But you assume that, say, if the company had not retained profits with itself and declared the profits as dividend to the shareholders, the existing shareholders, who would have chose to invest in the company's equity shares, the company might have come up with a right issue, because company might want some money from the market, isn't it? Now, what is a right issue? Right issue is a type of, or it's a manner of raising source, or it's a method of raising finance in which the existing shareholders are being offered the first right to subscribe to the company's shares. मतलब क्या हुआ? राइट इशू या राइट शेयर्स का मतलब क्या? कि वैसे शेयर होल्डर जो पहले से बिजनेस में या कंपनी के शेयर होल्डर है, उनको पहले अधिकार दिया जाता है कि भाई कंपनी को अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है, आप क्या कंपनी के शेयर में पैसा लगाना पसंद करेंगे? कंपनी आपको डिस्काउंटेड रेट पे ये इशू लेकर आ रही है, राइट?
तो आप मान लीजिए मार्केट में आपकी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं भाई आप मुझे 75 रुपए दे दीजिएगा, लेकिन पहला अधिकार कंपनी के शेयर्स पे अप्लाई करने का आप ही का होगा, राइट। तो वो जो शेयर होल्डर कमाता, मार्केट से अगर वो खरीदता तो 100 रुपए में खरीदता, लेकिन आपसे खरीद रहा है राइट इशू में तो कितने में मिल रहा है, 75 में मिल रहा है। तो उसको जो मार्जिन होता, जो मार्जिन मिलता, सिर्फ इसलिए मिलता क्योंकि आपने उसको, उसके पास अर्निंग्स दिया, कैश है उसके पास, उस वो डिविडेंड आपने उसको दिया, उसका वो इस्तेमाल करता। तो वहां पर जो अपॉर्चुनिटी लूज हुई, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन यहां पे एक अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि जितना भी पैसा उसको डिविडेंड के तौर पे मिला है, पूरा का पूरा पैसा उसने लगा दिया किसमें, इक्विटी शेयर्स, राइट इशू में उसने लगा दिया। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। जब उसको डिविडेंड मिलता है तो उसमें से डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता है। जब डिविडेंड मिलता है तो उसका कुछ हिस्सा ब्रोकरेज वगैरह में खर्च उसको करना पड़ता है, या अगर आप कंसल्टेशन फीस, अगर आप किसी की सलाह लेने जा रहे हैं तो कंसल्टेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके डिविडेंड अर्निंग्स का इन तमाम खर्चों पर चला जाता है, राइट। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि एक्चुअली में जो पैसा जितना आपको था, वो पूरा का पूरा पैसे से आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, इसलिए आपके पास कमाने का मौका ऑलरेडी कम हो गया। अगर यही पैसा बिजनेस के पास होता, रिटेन करके बिजनेस रखता और वो अपने एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में डालता, हाँ, उसको फिर और यूज करता, री इन्वेस्ट करता अपने बिजनेस में और कैश को जनरेट करने के लिए, तो शायद वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता, राइट। तो इसीलिए कहा गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कुछ और नहीं है, या रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ और नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। जो हमने अपॉर्चुनिटी को लूज किया बाय मेकिंग श्योर दैट वी आर retaining the cash in the business is called cost of capital of retained earnings। ठीक है, कुछ फॉर्मूला लिखना है इसमें, फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूले से पहले कुछ 2-3 लाइन और लिखना है। The opportunity cost of retained earnings, the opportunity cost of retained earnings to the shareholders is, therefore the rate of return that they can obtain by investing the net dividends bracket that is after tax and brokerage bracket close in alternative opportunity of equal quality फॉर्मूला लिखिएगा। के आर इज इक्वल टू के और स्मॉल आर, कैपिटल के और स्मॉल आर इज इक्वल टू के ई
के आर का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, के ई 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस बी। के आर इज इक्वल टू, नीचे लिखेगा वेयर के आर इज इक्वल टू required rate of return on retained earnings, required rate of return on retained earnings, फिर नीचे वाली लाइन में के ई इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के ई इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, T is equal to shareholders marginal tax rate or B is equal to brokerage cost. गोल 48 हल्ला नहीं। देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या लिखा, के आर यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस बी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए, के आर का मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालने के लिए बहुत जरूरी होगा कि पहले आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पता ही नहीं है तो के आर शायद आप नहीं निकाल सकते। अब जैसे यहां पे लिखा गया 1 माइनस बी और 1 माइनस टी, अब ये 1 माइनस टी का मतलब क्या हो गया, टैक्स रेट्स। मान लीजिए अगर टैक्स रेट 30% है तो 1 माइनस 0.3 करेंगे, 30% है यानी कि 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7, और ब्रोकरेज अगर 2% है, कितना परसेंट है, 2% है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.02 हो गया तो 20% हो गया। यहां पे 2% है ब्रोकरेज, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.02 यानी कि 0.98। अब जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल चुके हैं, अगर याद होगा तो। हाँ, कैसे निकाले थे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था, डिविडेंड यील्ड मॉडल था, और क्या था, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मेथड। चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ के चैप्टर को क्लोज करेंगे। उसका